Today, I will discuss about understanding depression and anxiety disorder. I'm Dr. Abha Singh, Associate Professor and Head Department of Psychology, PPN College, Kanpur. So, today we will discuss and understand the meaning of depression and anxiety disorder. These disorders are the very major disorder, and in everyday life we can observe such type of disorders. So depression is a mood disorder that involves a persistent feeling of sadness and loss of interest. It is different from the mood fluctuations that people regularly experience as a part of life. Major life events such as bereavement or the loss of loved one may lead to depression. ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको हम कॉमन लाइफ में हर दिन सुनते हैं कि उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वो एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। बट एक्चुअली में हमें समझने की ज़रूरत है कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिप्रेशन किसे कहते हैं। Depression is a common mental disorder with over 280 million people of all ages and estimated 3.8% of population suffering from it globally as per the World Health Organization. In India, depression is very common. These days, around 45.7 million people are suffering from it. The highest prevalence of depressive disorders has been observed in Tamil Nadu, Kerala, Goa, and Telangana. A high prevalence of depressive disorders was seen in females, like 3.9%, then males 2.7%. दैट मीन्स कि फीमेल में डिप्रेशन की प्रीवेलेंस ज़्यादा देखी जा रही है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉमन पीपल को ये कई बार इग्नोर कर जाते हैं ये सिम्टम, जिसकी वजह से सुसाइड तक हो जाता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉमन फीचर एंड व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, लाइक सैडनेस ऑफ मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल लॉस हो जाता है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, चाहे वो आपका करियर हो, पढ़ाई हो, हाउस होल्ड वर्क हो, या फिर किसी भी तरह की प्रोफेशनल इंटरेस्ट लॉस होने लगती है। फीलिंग लो, सैड, अपसेट, स्लीप में बी गेटिंग अफेक्टेड। बहुत बड़ा सिम्टम है जब आपकी स्लीप अफेक्ट होने लगे, या तो स्लीप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बिल्कुल ही बहुत कम हो जाती है। तो स्लीप डिसऑर्डर्स भी हमें देखने को मिलता है, ये इसका एक मेजर सिम्टम है। हैविंग थॉट ऑफ होपलेसनेस, बिल्कुल आशा खत्म हो जाती है। हेल्पलेसनेस, हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है, वर्थलेसनेस की फीलिंग आती है। वन माइट फील फटीग्ड, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फील लाइफ एज अ बर्डन, जिंदगी एक बर्डन की तरह, बोझ की तरह महसूस होने लगती है। इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? देयर आर सेवरल पॉसिबल causes of depression. They can range from biological to circumstantial. Common causes की बात कर हम करें तो ब्रेन केमिस्ट्री भी अफेक्ट होती है। देयर मे बी अ केमिकल इम्बैलेंस इन पार्ट ऑफ ब्रेन दैट मैनेज मूड, थॉट, स्लीप, एपिटाइट एंड बिहेवियर इन पीपल हु हैव इन डिप्रेशन। हार्मोनल चेंजेस भी हम देख सकते हैं, चेंजेस इन फीमेल हार्मोन्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक ड्यूरिंग द menstrual cycle, postpartum period, menopause may all raise a person's risk for depression. Family history, you are at a higher risk for developing depression if you have a family history of depression or another mood disorder. Early childhood trauma. Some events affect the way your body reacts a fear and stressful situation. फैमिली या अर्ली चाइल्डहुड का बहुत बड़ा प्रभाव डिप्रेशन या एंजाइटी पर पड़ता है। एज वी ऑल नो, ये जो चाइल्डहुड स्ट्रेसेस होते हैं जो हमारे अडल्टहुड पर्सनैलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। सब्सटेंस यूज, अ हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस और अल्कोहल misuse can affect this risk. Pain,
People who feel emotional or chronic physical pain for long period of time are significantly more prone to develop depression. Risk factor for depression. Gender, common factors include gender. The prevalence of major depression is twice as high in female as in males. Genetics. One should have increased risk of depression if you have a family history of it. Socioeconomic status. Socioeconomic status, including financial problems and perceived low social status, can increase the risk of depression. Gender identity. The risk of depression for transgender people is nearly fourfold that of other people. Substance misuse. About 21% of people who have a substance abuse disorder also experience depression. Medical illness. People with severe health issue such as heart disease, cancer are twice as likely to have depression as compared to others. Treatment. डिप्रेशन की ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो देयर आर सो मेनी वेज. Medication and psychotherapy are effective for most people with depression. However, many people with depression also benefit from seeing a psychiatrist, psychologist, and other mental health professionals. Meditation and exposure to nature may also reduce depression. If one have severe depression, may need a hospital stay or may need to participate in a outpatient treatment programs. Psychotherapy is a general term of treating depression by talking about your condition and related issues with the mental health professionals. Psychotherapy is also known as talk therapy or psychological therapy. Different types of psychotherapy can be effective for depression, such as cognitive behavior therapy and interpersonal therapy. Depression causes over half of all the suicide worldwide, and the rate of treatment for those suffering from depression is poor. In US, 64% of those with major depressive disorders are seriously impaired in their inability to function, yet only 65% of everyone experiencing clinical depression gets treatment. In case of depression, India is also in increasing order. ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल जो भी हमारी लाइफस्टाइल है या रोज भाग दौड़ की स्थिति में ये बहुत डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है जो बहुत ही कॉमन होता जा रहा है इंडिया में, और सुसाइड रेट भी इंडिया में बहुत इंक्रीज हो रहा है. तो डेफिनेटली इंडिया में इसका जो प्रिवेलेंस है वो तो बढ़ा है, पर इसके ट्रीटमेंट के लिए जो उपाय हैं वो वैसे के वैसे ही स्टैटिक हैं. गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कोई अलग से बहुत ज़्यादा सुधार नहीं दिखाई पड़ रहा है. मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की संख्या भी जिस रेट में बीमारी बढ़ रही है उस हिसाब से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की संख्या भी काफ़ी कम है. अब हम बात करेंगे इसी का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग एंजाइटी. एंजाइटी इज body's natural response to stress. It is a feeling of fear or apprehension about what to come. The first day of school, going to job interview or giving a speech may cause most people to feel fearful and nervous. But if your feeling of anxiety or extreme last for longer than 6 months and are interfering with your everyday life situation, you may have an anxiety disorder. कोई भी छोटी चिंता जो हमें बहुत थोड़े समय के लिए है, 1 दिन, 2 घंटे, 3 घंटे या 1-2 दिन के लिए, उसको हम एंग्जायटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे. लेकिन अगर कोई ऐसी एंग्जायटी जो परसिस्ट कर रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम और जिसके कारण आपकी एवरीडे वर्किंग हैम्पर हो रही है, अफेक्ट हो रही है, उन चीज़ों को हम एंग्जायटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में रख सकते हैं. Anxiety disorders, it's a normal to feel anxious about मूविंग टू अ न्यू प्लेसेस. अभी हम लोग बात कर रहे थे न्यू जॉब स्टार्ट करना, न्यू प्लेसेस पर जाना, नए तरह के कुछ एग्जाम्स को देना, नई सिचुएशन के साथ जब हम एनकाउंटर करते हैं तो कई बार बहुत सारे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस के एप्रीहेंशन के कारण हम एंजाइटी फील करते हैं.
Ordinary anxiety, it is feeling that comes and goes, but does not interfere with our everyday life. In case of anxiety disorder, the feeling of fear may be with you all the time. It is intense and sometimes debilitating. Anxiety disorders are the most common from the emotional disorder and can affect everyone at any stage. According to the American Psychiatric Association, women are more likely than men to be diagnosed with an anxiety disorder. Types of anxiety disorder. Anxiety is a key part of several different disorders. These include panic disorder, phobia, social anxiety disorder, obsessive compulsive disorder, separation anxiety disorder, and post traumatic stress disorder. An estimated 1 in 7 Indians suffer from mental disorder of varying severity in 2017, with depression and anxiety being the commonmost according to a study. According to a study 2007, 197 million Indians are suffering from mental disorder, of whom 46 million had depression and 45 million have anxiety disorder. It is such a great number and it is a very alarming situation. The prevalence of depression is the highest in older adults, which has significant implication for the aging population of India. Depression is also associated with the suicide death in India. No doubt, depression and anxiety both are connected. अगर ये चीज़ें बहुत इंटेंस हो जाती हैं तो फाइनली सुसाइड जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं. एंजाइटी के क्या मेजर सिम्टम्स हैं? Being worried all the time, restlessness, headache, sleeplessness. Sleeplessness देखिए दोनों में ही कॉमन है, चाहे वो डिप्रेशन हो या एंजाइटी. Compulsive behavior such as washing hands, seeking reassurance, doubting everything, irritation and frustration. Causes. Genetic dispositions. People with a family history of anxiety disorder are more likely to develop the same. Environmental factors, prolonged illness, exposure to stress or traumatic event such as abuse, violence, death of a loved one can lead to develop of an anxiety disorder. फिजिकल फैक्टर्स भी इसके हो सकते हैं, जैसे कि डिजीज सच एज एबनॉर्मल हार्ट राइम्स, हार्ट फेल्योर, ओवर एक्टिव adrenal gland or thyroid gland, or respiratory disorder such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease can result in anxiety. Treatment. Anxiety disorders are generally treated with psychotherapy medication or both. Psychotherapy, talk therapy can help people with anxiety disorders, and to be effective, psychotherapy must be directed to your specific anxieties and tailored to your need. As you can understand that एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है वो सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से आती है. तो जब इसका ट्रीटमेंट प्लान हम लोग कर रहे होते हैं उस समय हमें ये देखना चाहिए कि हमारे क्लाइंट की स्पेसिफिक नीड क्या है. इसीलिए एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, टेलर्ड टू योर नीड, यानी क्लाइंट की नीड की अनुसार ही हम इंटरवेंशन प्लान करते हैं जिससे कि उसकी एंजाइटी या डिप्रेशन को रिड्यूस किया जा सके. Cognitive behavior therapy is an example of one type of psychotherapy that can help people with anxiety disorders. It teaches people different ways of thinking, behaving, and reacting to situation to help you feel less anxious. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में एक्चुअली आपके सोचने के तरीके पर काम किया जाता है ताकि आप डिफरेंटली सोच सको, जिससे कि आपके लाइफ में आपकी सोच में पॉजिटिव वाइब्स अधिक आ सके और नेगेटिविटी से छुटकारा मिल सके. Acceptance and commitment therapy, another treatment option for some anxiety disorder is acceptance and commitment therapy, जिसको ACT के नाम से भी जाना जाता है. ACT takes a different approach to CBT. To negative thought, it uses strategies such as mindfulness and goal setting to reduce discomfort and anxiety. Medication does not cure anxiety disorders but can help relieve symptoms. Healthcare providers such as psychiatrists or primary care providers can prescribe
medication for anxiety. Anxiety, if you have an anxiety disorder, you may also be depressed. While anxiety and depression can occur separately, it's not unusual for these mental health disorder to happen together. Anxiety can be a symptom of clinical or major depression. Likewise, worsening symptom of depression can be triggered by an anxiety disorder. Symptom of both condition can be managed with many of the same treatment: psychotherapy, counseling, मेडिटेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस. इंडियन कल्चर की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ वैदिक काल से ही मेडिटेशन, आयुर्वेद और साथ ही लाइफस्टाइल चेंजेस पर महत्व दिया गया है कि किस तरीके से हम परिस्थिति जन्य कारकों पर वर्क करके हम एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं. Finally, I can conclude that the regulating our emotions, which is very important, regulating our emotions and life. Depression and anxiety disorders can be controlled. Self control, meditation, mindfulness may help to overcome these disorders. These are the important sources to study further. If you want to understand anxiety and depression, ये कुछ सोर्सेज दिए गए हैं जिस पर आप जा करके इसको और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं. बहुत सारी साइकोलॉजी की बुक आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी. कार्सन एंड बुचर, कोलमैन, देर आर सो मेनी बुक्स रिलेटेड टू साइकोपैथोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिनको आप स्टडी करके एंजाइटी एंड डिप्रेशन के सिम्टम्स को और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Thank you very much for listening this video patiently. Thank you.